Welcome back to the third tutorial of AutoCAD. This is where we left in the last tutorial, and in this tutorial we are going to add with the dimensions and the text with the sizes of the rooms के कितने by कितने का आपका room है. So first thing is the first dimension which you read in any plan. किसी भी plan पे आप कोई भी dimension जब read करते हैं, like for example 10 by 12, the way it is written, let's say I'm going to double click here and I'm going to edit, or let's say I'm entering 10 by 12. So it means that 10 is the dimensional parallel to this line. So the first dimension will be horizontal dimension, which is 10 feet or 10 meter, whatever the units are. जो भी यूनिट्स होंगे, पहली डायमेंशन आपकी 10 जो है वो जिस लाइन के पैरेलल है उसको आपने काउंट करना है कि 10 फुट का मतलब है कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो भी आपके एरो लगे होंगे, इंटरनल एरोज हैं या एक्सटर्नल डायमेंशन हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये डायमेंशन इस तरह पैरेलल लिखी हुई है, इसका मतलब है कि 10 फुट आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और 12 फुट आपकी वर्टिकल डायमेंशन है, या इस डायरेक्शन की जो है वो 12 फीट है और इस डायरेक्शन की आपकी 10 फीट है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव देम एंड नाउ गोइंग टू टेक द डायमेंशंस. एंड देयर आर टू वेज कि आप लोग डायमेंशंस जो है वो go to dimension, then select on linear. The first, you see it is not snapping it, ये इसको पकड़ नहीं रहा कोनों को. तो to enable the option of snapping, here it is, object snap. The shortcut key is F3. Just click on that and now you can see कि ये easily कोने को पकड़ रहा है. When you have to click on that, it will ask you for the second dimension. If you want to take linear dimension, अगर आप linear dimensions लेना चाह रहे हैं सिर्फ और आप चाहते हैं कि किसी एंगल पे मूव ना करे, also enable the ortho command, जो कि F8 उसकी शॉर्टकट की है. Click ortho, then it is moving in straight lines. Now click here, just drag upwards or downwards wherever you want. It is 12 feet 3 inches horizontal. Again go to dimensions, linear, click for the vertical dimensions and click this corner. These are the inside dimensions. ये अंदर से अंदर dimensions हम ले रहे हैं, दीवारों की thickness इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे. 14 फुट 3 इंच आपके पास horizontal dimension है and the vertical dimension जो कि ये वाली डायरेक्शन है, ये 14 फीट है. तो 14 फुट 3 इंच इस तरह और 14 फुट इस तरह. अब आपकी मर्जी है कि आप हर कमरे के अंदर जा के ये लिखते जाएं, इस तरह डायमेंशन लेके मार्क करते जाएं और एंड पे सारी लेयर्स को और सारी डायमेंशंस को एक डायमेंशन की लेयर के ऊपर आप ट्रांसफर कर दें. कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले किया था, एस्केप दबा रहा हूं, क्लिक देम, ड्रैग देम, क्लिक देम एंड जस्ट सिलेक्ट द डायमेंशंस लेयर. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी कि जी कलर चेंज हो चुका लेयर का, और जो कि ग्रे कलर था, अब जैसे ही मैं डायमेंशन की लेयर को बंद करता हूं, मेरे पास सारी की सारी डायमेंशन गायब हो जाती हैं. सो अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द लेयर ऑफ डायमेंशन, इनेबल दैट, और अब आप देख सकते हैं कि जी वो दोबारा वापस आ चुकी हैं. अब एक ऑप्शन तो ये है डायमेंशंस लिखने की. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बेडरूम के बिल्कुल नीचे एंटर प्रेस करके इसको सेंटर अलाइन करके इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे. यहां पे आप नीचे लिख सकते हैं 14 feet 3 inches by 14 feet. So this is another option. अब आप इसको मूव करके किसी भी जगह के ऊपर, मैंने ऑर्थो इनेबल किया हुआ तो आप कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं. अब ज़्यादातर लोग इस तरह इसको प्रेफर करते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं. इट लुक्स नाइसर इन दिस वे. लेकिन जब हम वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो कि कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइंग्स दी जाती हैं जिससे वो देख के वर्किंग स्टार्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्किंग ड्राइंग्स. जब वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे जी आपने सारी डायमेंशंस इसी तरह देनी है जैसे मैंने आपको इस तरह लगा के दिखाई है. तो उसके अंदर सारी डायमेंशंस जो है ना वो इस तरह यू हैव टू गिव फ्रॉम द वन एज टू द अदर एज. उसके अंदर थिकनेस भी बताई होती है कितनी कितनी है. यहाँ पे आपको सिर्फ पता है कि जी रूम की वॉल सारी 9 इंचेस की हैं. हमने अभी तक कोई 4.5 इंच वॉल की दीवार बनाई नहीं है, थिकनेस की दीवार नहीं बनाई. सो लेट्स से कि वी आर गोइंग टू ऐड द टेक्स्ट इन ऑल दीज रूम्स. ये ओपन एरिया कितना है ये भी आप जस्ट मेजर करेंगे, 8 feet by 3 feet. So it's
easier to write 8 feet by 3 feet. Click move and you can move it in the center. Very easy. Bathroom is also 8 feet in width और अब आप उसकी हाइट चेक कर लें तो ये है जी 10 फुट 3 इंच. So double click to edit the text, press enter to go in the next line, then write 8 feet by 10 feet 3 inches. Let me place a dash. इसके दरमियान में एक डैश प्लेस करते हैं जी, इधर भी कर लेते हैं 10 feet 3 inches. So in this way you can write all the dimensions 6 feet by 4 feet 3 inches. Enter. 6 feet by 4 feet dash 3 inches. Go to center, gain center. Okay, select that, move and then place it in the center जिधर आप प्लेस करना चाह रहे हैं. delete this. Now you see कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो I'm going to complete this. Let me take the dimensions first कि कहाँ से कहाँ तक कितने dimension है. It is 18 feet. ये master bedroom हो जाएगा जी by 14 feet. 18 by 14. So enter. 18 feet by 14 feet. So that's it. Drag them, delete them, move it to the middle. That's it. Let's go to the lounge. और से सारी ये bathroom रह गया. It's also 6 feet in width और height के अंदर है जी ये 9 feet. So 6 by 9. 6 feet by 9 feet. That's it. Okay. Study room dimensions. First we have to measure the dimensions linear. This one is 12 feet by 13 feet 9 inches. So 12 feet by 13 feet 9 inches. So place dash. Okay. Delete. This is not in center. Drag them. Click center. Okay. Move. This is still not in center. अब ये center में आ चुका है. Store की क्या dimensions है? Of course the width is same. The height I think it will also be same. Yes, since I divided it in two parts, मैंने उसको दो हिस्सों में divide किया था इस वजह से. So 12 feet by 13 feet 9 inches. That's it. Lounge. It's a pretty big lounge. 28 feet by 28 feet 3 inches. 28 feet by 28 feet 3 inches. Again, center line. Okay. Let me move it to here. We have to give the width of the lawn 7 feet wide. Enter. 7 feet wide. It's left. Trying dining. 20 feet by 30 feet. 20 by 30. So let me write here 20 feet by 30 feet. That's it. Stairs and kitchen dimensions linear. Kitchen is 16 feet 4 into 7 by 8 inches. I'm just going to copy that.
by other dimension is 10 feet. I think this is the same. Yes. So I'm just going to copy this, Control C. I'm going to edit this, double click, enter, Control V. Just going to center line that, click OK, move in the center, yes. What about the length of the or the width of the lobby? I'm going to copy this. No, let's say COPY copy. I'm going to disable this object snap. Going to paste this here, and let's say lobby, and have to check what is the width of lobby. Object snap is not enabled. Let me go to dimensions, linear. It is 6 feet 9 inches. So I am now going to double click on lobby. 6 feet 9 inches. That's it. This is not a bedroom. Yes. Let's say entrance lobby. I'm calling it lobby. आप जो मर्जी नाम रख सकते हैं इसका. Dimensions will be same, 6 feet 9 inches by 8 feet 6 inches. 6 feet 9 inches. I have to place a dash. 9 inches by 8 feet 6 inches. Click OK and delete them. We forgot to make it center. Which is copy, paste. I did not copy. Let me write it myself. 20 feet by 1 into 7 by 8. I have to copy the same style, so I'm going to copy this and going to just paste it here by 23 feet and 3 inches. Okay, now removing this and removing this, and I'm going to center line that. This is the porch. Let me just that, it's fine. Now we have lawn, and the dimensions of lawn will be 20 by 14. 20 feet by 14 feet. So that's it. All the dimensions are done, I guess. Well, yes, all the dimensions are done, including the exterior dimensions. The dimensions of gate is
left. If you want to add, you can add the dimensions like this, 16 feet. If you want to add the lower gates dimension, smaller gates dimension, you can add this as well, 3 feet. So you can add any dimension if you want to, any unknown dimension. So this is how you add dimensions, and the text is also given to you. इन द सेम वे आप लोग इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाएंगे. फर्स्ट फ्लोर के प्लान के अंदर ज़्यादा आसानी होगी कि आप चीज़ें ये ग्राउंड फ्लोर की कॉपी पेस्ट करेंगे, तो काफ़ी साइजेस जो है ना वो यूजुअली सेम होते हैं, तो कम टाइम लगता है आपको फर्स्ट फ्लोर के प्लान के ऊपर. जी, नाउ वी विल बी एडिंग डोर्स एंड विंडोज़. दरवाजे कैसे डाल सकते हैं आप लोग और खिड़कियाँ कैसे लगा सकते हैं, वो बनी बनाई लेनी है या आपने खुद बनानी है, वो मैं आपको अब इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अल्लाह हाफिज़.